Good morning, students. How are you all? Fine. Check out your English grammar book. Today we will do exercise of chapter 12 preposition. Okay? Open page number 54. In previous class we have discussed the meaning of preposition. Preposition are also called, what are preposition? Preposition are position words and they are placed before noun or pronoun to show its relation with noun or pronoun. He is sitting on the bench. On is what? Preposition and bench. बेंच से उसका रिलेशन है किसका? ही इज सिटिंग ऑन द बेंच. वह बेंच पर बैठा है. ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 54. व्हाट वाज योर होमवर्क? आपका होमवर्क क्या था? आपको पूरे प्रेपोजिशन के पूरे लिस्ट लिखने थे. क्या आपने लिखा है? हैव यू लर्न दैट लिस्ट? ऑल द पोजीशन वर्ड्स? Then you can easily do this exercise and I have also practiced this exercise, isn't it? Now first question is multiple choice question. Tick the correct answer. Put the pen dash the ink pot. See here pictures are given. आपको पिक्चर को देखते हुए आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा सुटेबल प्रेपोजिशन आपको यूज होगा. Put the pen in the ink pot. पेन इंक पॉट के अंदर है, अंदर रखो या अंडर. अंडर मीन्स नीचे. इनटू उसके he fell into the well. तो यहाँ पे क्या होगा? What you will write here? Put the pen in the ink pot. Second is the fan is dash the head. फैन मेरे on the head नहीं है, हेड के ऊपर. over उसको क्या बोलेंगे? over. Okay, over the head. Here see in the picture. Third sentence is the man is dash the fan. Fan. Man क्या है? फैन के अंडर में, फैन के नीचे में बैठा है. At the fan, फैन के उसमें चिपक के बैठा है. फैन के अंदर में है. In no, he is under the fan. So write here under. Fourth sentence is Sohan is talking dash Mohan. See here two persons are talking to each other. So what you write here? Talking to. Sohan is talking from Mohan to Mohan with Mohan. No, Sohan is talking to Mohan. Turn your page, page number 55. Pick out preposition from the sentences given below. Here 10 sentences are given. First you read the sentence, try to understand its meaning in your language. आपको जो भी भाषा में आती है उस भाषा में आप इसको ट्रांसलेट कर लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे preposition कौन सा है. He sits besides his brother. Besides means उसके बाजू में. He sits besides his mother. Underline the word beside. Beside is preposition. He lives in Kolkata. वह कोलकाता में रहता है, में रहता है. इन इज व्हाट? प्रेपोजिशन. अंडरलाइन इन. थर्ड सेंटेंस इज इट इज 4 o'clock बाय माय वॉच. मेरे वॉच में अब 4 बजे हैं. बाय. प्लीज राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड. टू इज व्हाट? प्रेपोजिशन. प्लीज राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड. फिफ्थ सेंटेंस He drove his car speedily through the streets. Through the streets मतलब वहाँ से वो गुजर रहा था. स्ट्रीट से, स्पीड से अपनी कार को, streets means रोड से वो स्पीड से गुजर रहा था. Through the streets. Through is preposition. People were talking about the accident. लोग एक्सीडेंट के बारे में बातें कर रहे थे. About. There is a narrow bridge over the river. There is a narrow bridge. ब्रिज कैसा है? नैरो है, सकरा है. किसके ऊपर में है? Over the bridge. ब्रिज के ऊपर में. Over is what? Preposition. The two goats met on the bridge. दो बकरियां ब्रिज के ऊपर में मिली थी. Met. Meet, met. Met is past form. मिली थी. On. On is
preposition. The cat sleeps under the table. बिल्ली कहाँ सोई है? टेबल के नीचे में. Under is preposition. I am interested in reading poems. मैं poem को पढ़ने में, मुझे poem पढ़ने में इंटरेस्ट है. poem पढ़ने में. In is what? Your preposition. Understood? So what you have to do, students, was to read, try to understand its meaning in your language, then you can easily do this question. Now question number 3 is complete the sentences given below with the correct preposition given in the box. Students, in the box, see here, box is given and there are certain words given. You have to pick that word and fill the blanks with the appropriate preposition. These are all position words. We sat, words are near. Near means past, in, under, to, at, before means पहले, in front of, सामने में, for, with, in. We sat dash a tree to rest. हम ट्री के नीचे में बैठे थे. काहे के लिए? क्यों बैठे हम? रेस्ट के लिए. We sat under a tree. ट्री के हम नीचे बैठे थे रेस्ट के लिए. So write here under. Second sentence, I parked my car dash a shop. मैंने अपने कार को शॉप के पास में पार्क की थी. पास में, शॉप के पास, near. Second answer is near. Third, all the girls were dash the playground. All the girls were at the playground. सभी लड़कियां प्लेग्राउंड पर थी. Monday comes before Tuesday. Monday Tuesday के पहले आता है. Before. Fourth answer is before. My money is in the purse. मेरा पैसा पर्स के अंदर में है. So write here in. I am thankful to you. मैं आपका आभारी हूँ. I am thankful to you. Write here to in 6th sentence. 7. Let us wait for him here. चलो हम उसके लिए यहाँ रुकते हैं. Let us wait for him. Write here for. 8th sentence. My brother is standing in front of me. मेरा भाई मेरे सामने में खड़ा है. In front of. Write here in front of. 9. Open your book. Daily हम तो रोज ही सेंटेंस बोलते हैं. Open your book at page 13. Open your book at page. I daily say this word. हम ये सेंटेंस डेली बोलते हैं. Open your book at page 13. At. I am pleased with you. I am pleased. मैं आपसे खुश हूँ. Okay. Now my homework is that first write the definition of preposition in your copy. Then write all the position words. List these the position words. Then do the practice exercise which we have already discussed in earlier classes. And do this exercise in your book. In next class we will do conjunction page number 56. सबसे पहले आप conjunction एक बार अपने मन से पहले पढ़ के आना. Tomorrow in next class we will discuss conjunction chapter 30. Okay, thank you. Have a nice day.